Hello students, your own channel ICSE update will learn the most important poem for this year ICSE 2026। बहुत ही ज़रूरी पोम है इस साल के लिए क्योंकि इस बार ICSE क्वेश्चन में ये पोम से क्वेश्चन नहीं आया है। सो आप लोग बिल्कुल ये वेरी केयरफुली पढ़ना। इस बार मैं 100% कह सकता हूँ कि क्वेश्चन इस पोम से आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग in line, please comment me, I will reply. So when great trees fall, written by माया अंगेलव। माया अंगेलव ने ये कविता लिखी है उनके दोस्त जेम्स बॉल्डविन के मृत्यु पे। वो शोकाहत थे, तो उनके मृत्यु पर जेम्स बॉल्डविन एक आदमी थे जिससे माया अंगेलव वॉज इंस्पायर्ड। सो उनके मृत्यु पे वो बहुत ही शोकाहत होके ये पोम लिखा है। सो ये हम शुरू करते हैं। When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. Now, when great trees fall, rocks on distant hills shudder. Shudder means fall down. When great trees fall means when great trees fall, rocks on distant hills are supposed to be immovable. Okay, because they are heavy, so they should not move on little vibrations. Great trees fall means these are little vibrations, so they should not move on this type of little vibrations. So this symbolizes that even the heavy rocks, which are very much heavy on the fall of great trees, they are also impacted. Then means the rocks on distant hills shudder. नेक्स्ट, लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस, इवन एलिफेंट लंबर आफ्टर सिट। लायन हंकर डाउन मतलब क्राउच करते हैं, क्राउच करके बैठते हैं। ओके, इन टॉल ग्रासेस मतलब छुप जाते हैं झाड़ियों पे, ग्रासों पे। एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी। दिस मीन्स elephants are supposed to be enormous creatures. They are enormous slow moving creatures, heavy creatures. They are supposed to be not fearful. Okay, उनको क्यों डर लगेगा, वो इतने बड़े जानवर हैं, फिर भी उनको डर लगता है। यो एंड वो लंबर आफ्टर सेफ्टी मतलब शांति के खोज में यो घूमते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट्स, small things recoiled into silence, their senses eroded beyond fear. Small things, this means might any flies like butterfly, like mosquitoes, and all the little organisms like the snails, even the all the little organisms, those are very little. They are also very much impacted that they cannot feel anything, लेट अलोन फियर मतलब डर के अलावा वो कुछ नहीं सोच सकते, इतना वो कंडीशन खराब होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ब्रीथलेस। इट इज एज टू द बिलीव्ड व्हेन आवर loved one leaves us from this world of spirit to from this world of sensuals to and goes to the world of spirit, we the believed, okay, those who are overwhelmed by the love of their loved ones, we are very much impacted that we breathe briefly and the air around us become light, means light, rare mean मतलब जो हवा है वो कम हो जाती है। मैं अगर रूम में बैठा हूँ तो वो हवा इसे एज इट इज सक्ड आउट ऑफ द रूम। एंड स्टेराइल मीन्स लेस, ओके, दैट इज इट इज सक्ड आउट ऑफ द रूम एंड देयर इज नो एयर टू ब्रीद इन। वी ब्रीथ ब्रीफली और आइज ब्रीफली। हम बहुत ही कम देखते हैं क्योंकि एंड व्हेन वी डू सी, इवन व्हेन वी सी, it becomes too painfully clear to us that the world will never be the same without the great souls. Means जब भी हम देखते हैं, हम तो बहुत ही कम देखते हैं इस समय पर, when our great souls, our loved one leaves us, our eyes briefly मतलब जब हम देखते हैं हमारा जो फीलिंग्स है वो इतना पेनफुल होता है कि जो उनके बिना ये जो कभी भी सेम नहीं होगा, ये हम फुल्ली बहुत ही समझ सकते हैं। Our eyes briefly see with hurtful clarity, annoying pain, okay, means choose us on unpromised works that we have not done with them. मतलब बोला था पर नहीं किया, ये हमको बहुत ही डिस्टर्ब करता है। क्यों नहीं किया, ये अगर आपने एक्सपीरियंस किया, आपके घर में दादा दादी की नाना नानी आप अगर गुजर जाते हैं तो ये अपने
बिल्कुल नोटिस किया होगा अगर। नेक्स्ट, आवर मेमोरी सडनली शार्पन्ड, मतलब जो भी द टाइम वी हैव स्पेंट विद आवर लव्ड वंस suddenly get sharpened. We remember the times we have spent with our loved ones. Like if you have a grandma and she passed away, man, then we remember the moments, okay, any moments, from for everybody in this world, and we got very much we be very much sad on their death. Okay, our memory suddenly sharpened. वो जो भी वक्त हमने उन्हों के उनसे बिताया है वो हमको याद आ जाता है और हम बहुत ही दुख में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैरा, मतलब यही पैरा, एग्जामाइन नॉज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड प्रॉमिस्ड वर्क्स नेवर टेकन। ओके, सो एग्जामाइंस मतलब हमें खाता है, नॉज मतलब चूज ऑन अ काइंड वर्ड, अनसेड प्रॉमिस्ड वर्क्स नेवर टेकन, मतलब जो मैंने कहा, मतलब तुमने कहा था ये करूँगा और कोई बात तुमने नहीं बता पाया हो उनको, हमारे लव्ड वन जो हमको छोड़ के चले गए हर वक्त के लिए। सो इट इज़ फॉर दैट, नॉज ऑन काइंड वर्ड अनसेड प्रॉमिस्ड वर्क्स नेवर टेकन, द वर्ड विच आर नॉट एबल टू से that choose us, that we are not able to them, they have leave with us forever, and we got very much painfully hurted that they had left us forever, and the world will never be the same without the great souls, because they have left us and forever they have left us. So is choose us on the kind word that unsaid promised works never taken. We think that if we have to tell it, but then it is very much good, but we cannot do it anymore. So it knows on kind words, choose us on kind words, unsaid promised works never taken. Never means वो कभी भी नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि the great souls have left us, because up till they were alive we have the opportunity to tell them, or the things we have not done we could say them, but now they have left us, so there is no opportunity. So it knows on kind word and self promised works means हमें याद आता है, हमको लगता है अगर हमने करना बहुत अच्छा होता, बट हम नहीं कर सकते। सो इट चूज ऑन द 9 words unsaid promise works but never taken. Great souls die and are really bound to them, take leaves that our soul depend upon the nurture, now shrink wizened. Okay, oh yes, great souls die. Now you understand the theme of the poem. At first I am telling here the figure of speech predominate in this poem, extended metaphor, not metaphor. And if you see the structure of the poem, is long trees, like great trees, long trees. Okay, so that is why, and so great trees like this, and the predominant figure of speech is extended metaphor, not metaphor, extended metaphor. If question come, always write extended metaphor, not at all metaphor. Okay, extended metaphor, very much time I'm telling you, extended metaphor is the figure of speech predominant in this poem. Next, great souls then are really bound to them, take leaves that are souls in the nurture, and shrink wizened. We depend upon the nurture of our great souls, means we all are dependent upon our elders, like your mother feed you, then if you are a small kid, then they in your childhood days they used to help us in take bath, to eat us, to take outside. We are dependent upon the nurture means loving, caring. Okay, they cares for us, and when these great souls die, we are means bound, means we have left the reality, our reality bound to them, takes leave them, means we हम उन पे निर्भर थे, अब जब वो हमसे छोड़ के चले जाते हैं, ये our reality bound to them, take leaves of us. So our reality take bound of them, take leaves of us. Okay, take leave of us. जो हम उन पे नर्चर पे डिपेंड कर रहे थे वो लीव करता है, वो भी लेफ्ट करते हैं ये वर्ल्ड, एंड वी आवर देयर नर्चर ऑल्सो लेफ्ट अस. वी आर bereaved of their love, of their caring and all. Okay, now shrink wizened, and these great soul not only affect single person, okay, but also influences almost all the persons in their family, their neighborhood, and whoever they knows them. So they are influenced by them. When these great souls die, they are very much saddened. So this is the condition, that they are really that bound to them, that nurture, dependent upon their nurture, care, love,
leave of them. Okay, our soul dependent on nature now shrink, wizened. Within we like this, we do like this. Okay, they are shrinked, wizened like this. The reality gets wizened. Okay, we are. So what I was saying is that great souls and are really bound to them take leaves of us. Again, I am telling, ग्रेट सोल्स डाई, मतलब जब ये ग्रेट सोल परम आत्मा हमसे हमको छोड़ कर चले, लाइक हमारे दादा दादी नाना नानी जब हमको छोड़ कर चले जाते हैं, हम बहुत ही उदास हो जाते हैं. हम ग्रैंडसन्स, अगर तुम ग्रैंडसन हो, अगर हमारा कोई, जब अगर तुम के आपके लोगों को साइड में हम देखें तो आप, अगर आपके दादा दादी नाना नानी चले जाते हैं तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, सपोज. ओके, एंड फॉर द elders when their father mother dies, whatever I have experienced in my childhood when my grandma passed away. That's why I'm telling you, our reality bound to them take leave. What we are bound to them, I mean, depending upon the nurture, now shrink, wizened. We have to face the harsh reality of this world faced by ourselves. That is why I'm telling you. So now shrink and wizened, because we cannot anymore depend upon the nurture. We'll do it by ourselves, and we'll do it by our hard work. We have to face the harsh reality of this world. Next, our minds formed and informed by the radiance fall away. We are not so much maddened and reduced to unutterable ignorance of dark cold caves. Our minds formed and informed by the radiance fall away. जो मन उनके रेडियंस से, मतलब उनकी इंस्पिरेशन ने हमने गठन किया था, वो फॉल अवे, ओके, गिर जाता है. वी आर नॉट सो मच मैडन्ड एज रिड्यूस्ड अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स. हम इतना भी पागल नहीं होते हैं कि हमारे बातें जो है डार्क कोल्ड केव्स की तरह हो जाता है. द डार्क कोल्ड केव्स, यू नो, गुफा जो है बहुत ही अंधेरा है और ठंडी है, हैं. तो ये वी आर नॉट सो मच, वी आर मैडेड बट नॉट सो मच मैडेंड, बट वी हैव टू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. सो द पोएट हैज टेल्ड, वी आर नॉट सो मच मैडेंड बट नॉट सो मच मैडेंड एज इट इज टू अनअटरेबल ignorance of dark cold caves. Next, the last paragraph of this poem. And when great souls die after a period, peace blooms. Now you have to understand the ethics of literature. When great souls die after a period, peace blooms. मतलब time is the best healer. Healer means ये सब ठीक कर देता है. हाँ, when great souls die after a period, peace blooms slowly and alwaysly, regularly. Space is filled with a kind of soothing electric vibration. Our senses restored, never to be the same. Whisper to us, they existed. We can be and better, for they existed. So now I'll tell you the explanation, give you the explanation. बहुत ही सावधानी से सुनिएगा. Great souls after a period, peace blooms. आपको हम बता देंगे, जब कोई हमारे घर में चला जाता है हमको छोड़कर, तो आफ्टर ए पीरियड, यू नो, पीस ब्लूम. हम हर बार उतने नहीं, उनके बात नहीं. आफ्टर ए पीरियड, लाइक 1 साल 2 साल के बाद हम थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं. ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया. अब आपके घर में कोई गया है आपको छोड़कर, अगर सपोज, so that is the poetry. After a period, peace blooms. We have to adjust to the natural conditions. Okay, because we have to work, we have to feed ourselves, to go to office, home, school, whatever. We have to work ourselves. We have to adjust, and therefore, after a period, peace bloom. The poet explains that the time is the best healer for everything. Slowly and alwaysly, irregularly, spaces fill with a kind of soothing electric vibration. Our senses restored, never to be the same. Whispered to us, they existed. We can be and be better, for they existed. With a kind of soothing electric vibration means a vibration which will repair, you know, अगर हमारे किसी जगह पे कट जाता है तो हम एक टाइम के बाद तो ठीक होता कह रहे हैं. दैट इज वाई पोएम कंपेयर्स दैट द टाइम इज द बेस्ट हीलर. इट हील्स एवरीथिंग with a kind of soothing electric vibration means
a hope of something coming new to life. You know, when somebody dies, when for a period of time we got very much sad. After that, we have to we hope another for our next goal, that is maybe for your father, that my salary will be increased, I will get be promoted into upper junction, okay, to get the higher salary. This is the hope of something new coming life. When you are in a class, you will hope of that I will go to our next class, okay. A hope of something coming new to life means we have to आगे बढ़ना है हमको लाइफ में. सो होप ऑफ समथिंग कमिंग हो, ये ही पोएट ने यहाँ पर कहा है कि सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन दैट हील्स ऑफ एवरीथिंग, आवर सेंसेस रिस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम, whispered to us they existed, we can be and be better for the existed. आवर सेंसेस मतलब हमारा मन हमको कहता है, विस्पर टू अस नेवर बी द सेम, उनके बिना ये हमारा जो समय ये कभी भी हमने जो बिताया उनके साथ समय ये कभी नहीं आएगा, पर हमारा मन हमको कहता है कि दे एग्जिस्टेड, दे आएंगे, वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर द एग्जिस्टेड. क्यों उनको पता है? क्योंकि एक पॉइंट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर उन्होंने हमके साथ समय बिताया है. सो यही बोलकर हमको स्ट्रेस से मतलब दुख भरी पल से निकाल के कोशिश करते हैं, ओके. आवर सेंसेस रिस्टोर्ड, ओके, मतलब हम जो बहुत ही दुख में थे वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे रिस्टोर हो जाता है. एंड देन नेवर टू बी द सेम, वो कंडीशन तो कभी भी नहीं होगा उनके बिना जो हमको छोड़कर चले गए हमेशा के लिए. विस्पर टू अस दे एग्जिस्टेड, वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर द एग्जिस्टेड, मतलब वी कैन बी, हमको समझना होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव एग्जिस्टेड, वी हैव, हमने उनके साथ एक पल बिताया है, समय बिताया है, बेटर फॉर द एग्जिस्टेड. यही बोलकर हमको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा और हमारे अपकमिंग फ्यूचर में जो वर्क्स है उनके साथ हमको बढ़ना पड़ेगा. ये था आपका पोयम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल. When great trees fall. So I have explained you the very important, very important poem for this year, and I can assure you that question will come from this poem this year, because this year question has not come from this poem. Only 1-2 MCQ has came. So this year question will come for ICSE 2026 batch, I am telling you. So please, if you have not listened very much carefully, again listen from the beginning when I have started the explanation. So please listen, this is very important poem for this year. And at last, my honest request to you all, if my explanation had helped you, if it was helpful to you students, okay, then please subscribe. My honest request that if it has helped you, then don't forget to like the video and press the subscribe button. Okay students, अच्छा रहे ना. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.